Next, the next titration that we have to do, okay, it is called as back titration. It is called as back titration. Sorry, I'm not sharing my screen. Okay. Now you are able to see the screen. Yes, sir. Yeah. Oh, so back titrations. What happens is, let's first understand the concept. The concept says that suppose if there is some compound says Z, okay, and it is treated with say compound Y, and from here you are going to get some product P1. But now they say that the Y that we are taking, it is in excess. Matlab Y is taken in excess. Okay, Y is taken in excess. Excess. Okay, so some product is formed. Now they say that this Z which is taken, na, it is a sample. Sample means it will have some impurity. Okay, and the main job of back titration, the main job of back titration is to find purity, in a sample. Okay, so when Y is taken in excess along with Z, you will get some product. So if Y is taken in excess, that means even after the reaction, some amount of Y will be remaining in the system. So that remaining Y, whatever is remaining, say for example, it is treated with another compound X, and it is going to give you a product P2. Okay, so if I apply the law of gram equivalence, okay, I will say that from the first equation, see, this is my first equation and this is my second equation. Okay, so from the first equation, if we apply the law of gram equivalence, so I will say that gram equivalence of Z, okay, I will say that gram equivalence of Z, okay, is equal to gram equivalence of Z will be equal to gram equivalence of Y. I will say Y. Okay, but how much amount of Y? Uh, it will be like excess minus remaining. मतलब जितना आपने लिया है, ओके, माइनस माइनस gram equivalence of Y which are remaining. Okay, so they say that if, for example, you are taking 10 moles of Y and the remaining moles of Y are 7. So how many moles of Y are used in the reaction, madam? Can you tell me? Trinity, if the 10 moles which you are taking in excess, okay, and the remaining are 7 moles, so how many moles are used? Moles in excess 7. Uh,
So 3 Three, moles are remaining. 3 moles are. Now look at the second equation. From the second equation, you will say that gram equivalence of, you will say x, ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ x, बराबर है ये. ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ x के लिए हम क्या लिखेंगे? दैट इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ y which are remaining. I will write over here gram equivalence of y. I'm writing gram equivalence of y. So here, write gram equivalence of y, but y कौन से वाले? जो रिमेनिंग है वो, जो रिमेनिंग वाले है वो. बराबर है ये मैडम. So look at equation 3 and look at equation 4. Can I say that कि जो ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ y है, ओके, जो ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ y है रिमेनिंग वाले, दैट इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ x. सो फाइनल यहाँ से फॉर्मूला क्या निकलता है? आप लिखोगे ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ z is equal to what? ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ y जो किसमें है? एक्सेस में है, माइनस ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ x. You understood this, madam? This will be the final formula that we are going to use over here. Okay, and then we can find percentage purity. Understood this, madam? Yes, sir. Okay, so based on this, let's try to solve one particular question. Sir, And yeah, 1 second. I want to write down the final formula. yes, please write it down. And then you can open the PDF that I had given you yesterday of questions. Just let me know once you are done. Yes. Just 1 second, sir. I'll just open the PDF. It's the type 4 redox titrations that only. हाँ. Yes. So I want you to read question number type 5. Type 5 का 42nd question. 10 gram sample of BaOH2 is dissolved in 100 ml of 0.5 NHCl solution. The excess of Hmm. HCl was titrated with 200 ml of 0.2 NaOH. Find the percentage purity of BaOH2 in the sample. हाँ, तो अब इसमें देखो, सी this question is very much similar to what I have taught you now. Okay, in our case, it was the example that I had given was of Z. So what is Z in this case? It is barium hydroxide. Okay, and it is a sample of barium hydroxide. That means this is impure barium hydroxide.
In this case, who is our Y? HCl, because HCl is taken in excess, correct? Hmm. This is taken in. So they say that here you are going to get some product. The product will be BaCl2 and water, but that's okay. You don't need what are the products. Now they say that whatever is remaining HCl from this reaction, whatever is remaining, whatever is remaining, okay, that is treated with what? NaOH, I guess, correct? Yeah, that is treated with NaOH. So in our case, if you take our example, NaOH is nothing but X, and you will say product P2 is formed. If you use the final formula, जिसको मैंने orange color से box में रखा है, so what does that final formula tells us? It says gram equivalent of क्या है? Z. तो Z के जगह पे हमारे केस में क्या है? बेरियम हाइड्रोक्साइड. ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड. So that will be equal to ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ Y जो है यहाँ पर, Y दैट इज HCl जो एक्सेस में लिया गया है, माइनस ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ जो X है यहाँ पे, वो है NaOH. बराबर है ये ऐसा रहेगा. ठीक है. बस अभी इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है. अ, अब डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लगा दो. तो बेरियम हाइड्रोक्साइड के लिए जो फॉर्मूला लगेगा दैट इज N1 इंटू NF1. ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ HCl जो है, उसके लिए हम ले लेंगे नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम, क्योंकि नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम दिया गया है. और बेरियम हाइड्रोक्साइड का भी मतलब HCl का दिया है, और NaOH का भी नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम दिया है. तो यहाँ पे नॉर्मेलिटी, 1 मिनट. So here it will be like N3 into V3. Volume has to be in liters. Okay. So number of moles is what you have to find. The N factor for BaOH twice is 2. The normality of HCl is 0.5 into 100. So 0.5 into 100. 100 मतलब 0.1 लीटर, क्योंकि वो 100 ml है तो लीटर में डालना पड़ेगा. और N3 माइनस V3 में आप N3 ले लोगे 0.2, 0.2, और वॉल्यूम ले लोगे 0.2 लीटर. बराबर है ये. सो दिस इज लाइक 2 times of N1. दिस विल बी 0.05. ऐसा कुछ रहेगा, देखो 0.05 माइनस 0.04. तो ये कितना होगा? 2 times of N1 will be 0.01. तो N1 कितना हो जाएगा? It will be 0.005. So these are the moles of pure barium hydroxide. So once you get pure barium hydroxide का mass, then you can easily find mass of barium hydroxide. See, mass of barium hydroxide. So that is moles 0.005 into
molar mass. So molar mass of barium hydroxide is 173. बराबर है ये? ओ का मास कितना होता है? 16 टू 32 34। हाँ, तो अभी ये सॉल्व करके बताओ ना कितना आ रहा है। 173 इंटू 0.005। ये मल्टीप्लाई करके बताओ मैडम क्या आ रहा है? 173 इंटू 0.005। मैडम यू आर देयर? Yes, sir. 0.865. हाँ, 0.865 is the grams. Okay, now you look at this formula. The formula says that, see, percentage purity जो होता है ना, so it is mass of pure compound. मैं लिख देता हूँ, पहले फॉर्मूला भी लिख देता हूँ so that it stays in your records. It is mass of pure compound. ठीक है, mass of pure compound divided by mass of sample into 100. Okay, so this is the formula for purity of a sample. Whenever you want to find purity of any sample, this is the formula that you should look for. तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? परसेंटेज प्योरिटी। तो मास ऑफ प्योर कंपाउंड कितना आ रहा है? 0.865। मास ऑफ सैंपल कितना आएगा? सैंपल मतलब स्टार्टिंग में बेरियम हाइड्रोक्साइड का मास कितना दिया है? व्हाट इज द मास ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड दैट दे हैव गिवन? इट Uh, इज 10। yes, 10. impure barium hydroxide 10 into grams. 100. हाँ, 10 ग्राम। So what is the answer that you will get? Tell me. 8.65. So 8.65 is the purity of barium hydroxide. Got it? This is the answer. 8.65 is the final answer. Got it? Yes, sir. So have you understood the concept of back titration? Yes, sir. Okay. Now the last type of titration that we have to do, it is called as a double titration. Double titration. So double titration, na, basically it is used to find the uh, mass of, a compound in a given mixture. So the mixtures that can be given to you are NaOH and Na2CO3. Okay, like they will give you that there is a mixture of NaOH and Na2CO3 and it is titrated against HCl, वैसा. Or they can give you NaOH and NaHCO3. Or they can give you what? They can give you Na2CO3 plus NaHCO3. Okay.
Now, for this type of titration, one basic rule you need to know, that is of basic strength. You need to know the basic strength of this compounds. Matlab, which one is more basic? So then you will say that, sir, NaOH is more basic than Na2CO3, more basic than NaHCO3. In fact, NaHCO3 is an acidic salt. वो एक acidic salt है, ठीक है? So now it's like in a beaker, okay? Okay, we'll take the first case. For example, the gram equivalent of NaOH is X, gram equivalent of Na2CO3 is Y. So this is X, gram equivalent of NaHCO3 is Z. So over here it will be Y and Z. So what I'm doing is I'm taking the first case now. I'm taking the first case. So the first case is you are taking a mixture of NaOH and Na2CO3 and you are told to find the mass of NaOH and Na2CO3 in the mixture. Okay. Now, what happens? You are taking NaOH and Na2CO3 in a beaker and then you titrate it with HCl. So first NaOH जो है, it will come, मतलब HCl will come and it will neutralize NaOH to give NaCl and water molecule. NaCl and water molecule. Clear हुआ ये? Okay. Now, after complete neutralization of NaOH, you will take Na2CO3 and HCl will be taken again. So what you are going to get? You are going to get NaHCO3 and NaCl. Okay, so after this, you are going to get the first endpoint. Matlab, you are going to add an indicator that is the indicator that you are going to use is phenolphthalein. So this is going to give you first endpoint. Phenolphthalein जो है वो कलरलेस से पिंक हो जाएगा, बट Na2CO3 कंप्लीट न्यूट्रलाइज नहीं हुआ है. आगे इसका और एक रिएक्शन होगा विच इज दिस वन. NaHCO3 जो बना है, it will be neutralized with HCl to give you NaCl. Okay, and H2CO3. H2CO3 you can split and write it as H2O and CO2. Okay. So this is like second endpoint. This is like second endpoint. This is like second endpoint. तो इसमें क्या होगा? इसमें जो आपका मिथाइल ऑरेंज है वो येलो से रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, सो आफ्टर द फर्स्ट एंड पॉइंट, ओके, आई विल से दैट NaOH तो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो गया, मतलब X आएगा यहाँ पे, और Na2CO3 सिर्फ आधा ही न्यूट्रलाइज होगा, तो Y/2. ओके, एंड दैट विल बी इक्वल टू N1V1. ओके, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. और जो सेकंड इक्वेशन है, जब मिथाइल ऑरेंज रखा तो जो बचा हुआ Y/2 था वो न्यूट्रलाइज होगा. नॉर्मेलिटी विल बी द सेम, वॉल्यूम विल बी डिफरेंट. So this is how we find out percentage and mass in a mixture. Is this understood, madam? Yes, sir. Okay. So now I'm making one table over here. Okay. So we will say that
here there are some mixtures. The first is NaOH and Na2CO3, which we did just now. The second mixture that can be asked is NaOH, NaHCO3 और तीसरा जो है वो है Na2CO3 and NaHCO3. Got it? तो ये हमें याद रखना है। और यहाँ पे हम पहले फिनोल्फथिलीन ऐड करेंगे, HPH बोलते हैं उसको। फिनोल्फथिलीन इज कॉल्ड HPH, ओके, इट इज HPH। HPH मतलब फिनोल्फथिलीन होता है। और बाद में आपने मिथाइल ऑरेंज ऐड किया, ऐसे मिथाइल ऑरेंज इज MEOH। अब वो लोग बोल रहे हैं कि अगर मिथाइल ऑरेंज पहले से अगर ले लिया आपने, इफ यू आर टेकिंग मिथाइल ऑरेंज राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग ओनली यू आर टेकिंग मिथाइल ऑरेंज, तो क्या फर्क पड़ेगा? मिथाइल ऑरेंज फ्रॉम स्टार्टिंग, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फ्रॉम स्टार्टिंग। तो मिथाइल ऑरेंज तो एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है। तो पहले केस में क्या हुआ, एक्स और ये तो आधा ही न्यूट्रलाइज हुआ और बाकी का आधा ये न्यूट्रलाइज होगा। अब NaOH जो है वो तो कंप्लीट न्यूट्रलाइज होगा। NaHCO3 नहीं न्यूट्रलाइज होगा बिकॉज इट इज एन एसिडिक सॉल्ट, तो उसको सिर्फ मिथाइल ऑरेंज ही डिटेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे Y आएगा। Na2CO3 मतलब Y/2 को डिटेक्ट करेगा, और जो बचा हुआ Y/2 है और जो Z है वो कौन डिटेक्ट करेगा? मिथाइल ऑरेंज। नाउ दे से दैट इफ यू आर एडिंग मिथाइल ऑरेंज राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग, ओके, मतलब नो phenolphthalein is added, so just add this two. When you add this two, okay, you are going to get what? You are going to get X plus Y/2 plus Y/2, मतलब X plus Y ही होगा ये, ठीक है। और ये है आपका X plus Z होगा। सी दिस इज नॉट Y, दिस शुड बी Z ना, दिस शुड बी Z। दिस इज द eraser, eraser। तो Z is what you have to use over here, okay। एंड लास्ट में क्या हो जाएगा? लास्ट में आ जाएगा Y/2, लाइक Y/2 प्लस Y/2 एंड Z, क्योंकि see NaHCO3 is a very strong indicator, sorry, a methyl orange is a very strong indicator, it will detect all of them together, ठीक है। so this is what you need to know. Have you understood this, madam? Yes madam, are you there in the session? Yes, sir. हाँ, so have you understood this? Yes. Sure. Yes, sir. ओके, तो इसमें अभी देखो ना, लास्ट वो जो शीट है उसमें बैक टाइट्रेशन वाला है ना, उसमें एक क्वेश्चन है। आई वांट यू टू रीड दैट क्वेश्चन, प्लीज रीड दैट क्वेश्चन। 1 second, sir. हाँ, Yes. Hmm.
पेज नंबर 40, मतलब पेज नंबर नहीं, क्वेश्चन नंबर 48 है वो, इस क्वेश्चन नंबर 48। 200 ml of solution of mixture of NaOH and Na2CO3 was first titrated with HPH and 0.1 N HCl of 17.5 ml was required for the first endpoint. After this, Me orange is added after the first endpoint separately, and 2.5 ml of same HCl was again required for the next endpoint. Find the mass of NaOH and Na2CO3 in the given mixture. हाँ, so what is the case? See, the case is like you are adding phenolphthalein and then you are adding methyl orange. Okay, so the case is of NaOH and Na2CO3. Okay, you can see the first case. So when you are taking phenolphthalein, the gram equivalent will be x plus y by 2. देखो HPH में, and that it will be equal to N1V1, and जो बाकी का y by 2 है, so that will become N1V2. Okay, so if you substitute, see, this is like equation 1 and this is like equation 2. Now if you substitute equation 2 in equation 1, so you are going to get x plus N1V2, so that is equal to N1V1. ओके, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू आ जाएगा N1V1 माइनस N2V2। तो यहाँ पे x विल बी इक्वल टू, देखो नॉर्मेलिटी तो सेम ही है, N1 फॉर्मूला विल बी V1 माइनस V2। so what is x? So can you tell me what is the normality of HCl that they have given? What is the normality of HCl, madam? 0.1 that is given to us. And V1 is 17.5. V2 is 2.5 milliliters. Okay. But this volume has to be multiplied by 10 raised to minus 3 because ये लीटर में चाहिए हमें, ये मिलीलीटर में दिया है और हमको लीटर में चाहिए। ठीक है, तो नाउ लेट्स शो द कैलकुलेशन फर्दर। क्या लिखेंगे बताओ? x इज इक्वल टू 0.1 इंटू 15 इंटू 10 रेज टू माइनस 3। ओके, so that means x is equal to 1.5 into 10 raised to minus 3. See, what is this? This is the gram equivalence of, this is the gram equivalence of, क्या बोलेंगे आप? This is the gram equivalence of whom? NaOH. बराबर है ये? ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ NaOH। तो ग्राम इक्विवेलेंस का फॉर्मूला क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंस का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू इट्स एन फैक्टर। तो अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो इट विल बी लाइक 1.5 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 अपॉन एन फैक्टर। एन फैक्टर ऑफ NaOH क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो ये इसके नंबर ऑफ मोल्स है। So number of moles of NaOH is 1.5 into 10 raised to minus 3. This is the final answer. These are the number of moles, but you are told to find mass. को mass find करना है, ठीक है? तो अभी वो मैं यहाँ पे ऊपर कर रहा हूँ. You have to find the value of mass. I'm writing it down over here. So mass of NaOH
मास ऑफ NaOH, मास ऑफ NaOH, मास का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स ओके इनटू मोलार मास, मोलार मास इज हाउ मच? 40। NaOH का मोलार मास 40 होता है, तो 15 6, दिस इज लाइक 60 into 10 raised to -3, which means it is 0.06 grams. ये किसका मास है? NaOH का. This is like mass of NaOH. Very important. This is the mass of NaOH that you are going to get. अब दूसरा क्या फाइंड करने बोला है? मास ऑफ Na2CO3 भी तो बोला है, तो दैट इज y/2. उसके लिए y/2 लगाएंगे फॉर्मूला. y/2 was N1 into V2. So y is equal to 2 into normality 0.1. V is 2.5 into 10 raised to -3. So y will be equal to how much? 2.5 into 2 is 5. Like 5 into 10 raised to -4. So these are the gram equivalents of Na2CO3. ये Na2CO3 के ग्राम इक्विवेलेंट्स है. ओके, so once you get gram equivalence, you can find na gram equivalence is equal to number of moles into n factor of Na2CO3. So number of moles कितना आएगा? It is 5 into 10 raised to -4. N factor of Na2CO3 is 2. Okay, so N2 will be equal to 2.5. 2.5 है ये, ठीक है. Once the meeting is over, just join on the same link. 2.5 into 10 raised to -4. ये किसके मोल्स मिले हमें? These are the moles of Na2CO3. Once you get that, you can easily find mass. So mass